बेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी बेट्स हैं जिनमें काफ़ी मल्टी बैगर्स रहे हैं, वो एक जो स्क्रीन पे भी आएंगे। इन्फोसिस में इन्होंने ज़बरदस्त पैसा कमाया था। सीएमसी जो बाद में शायद टीसीएस के साथ मर्ज हो गई थी, उसमें ज़बरदस्त इन्होंने पैसा कमाया था। इन्फोसिस में तो 500 गुना रिटर्न मिला था इनको, सीएमसी में ज़बरदस्त रिटर्न मिला था। एक मैकडॉवेल आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया था, उसमें तो आपकी एक रिग्रेट भी रही थी कि आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन शायद आप उतनी बड़ी साइजेबल बेट नहीं ले पाए जो आपको लेनी चाहिए थी। तो यहाँ से आपके जो आपको सुन रहे हैं, अगर आप एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपका एक गुरु मंत्र क्या होगा? यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके की कंपनीज में लगाना चाहिए, किस तरीके का बेट साइज लेना चाहिए? अनुज जी, कपल ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट, आपने बताया जो मैंने शेयर लिए, और मैं भी शायद आज चर्चा करूंगा शेयरों के बारे में, बट एज अ डिस्क्लोजर आई वांट टू से दैट आई बाय एंड सेल इवन व्हाट आई जो मैं टीवी में बोल रहा हूँ, आई कुड बाय एंड सेल दैट। सो you know, please don't, these are not recommendations, these are just illustrative ideas. Please, I'm being very careful, so you know, do your own due diligence about that. So जो चीज़ मैंने सीखी अनुजीत over 30 years in the financial market, इसकी जिसी ने थोड़ी अच्छी कंपनी ले ली, भले ही not done well, but good businesses they bought and have had the patience to help them, they made enormous amounts of money. बिकॉज द इंडेक्स जब मैं शुरू किया था शेयर बाजार में 1989 में 600 के करीब था, अभी 60,000 के ऊपर पहुंच गया है. सो द इंडेक्स इटसेल्फ इज गिविंग यू सच रिटर्न्स. आई थिंक लॉन्ग टर्म विदाउट डिविडेंड्स द इंडेक्स कंपाउंडेड 15-16% फॉर अस, व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स वी आर गेटिंग आउट देयर. सो आई फील दैट जर्नी ओवर द नेक्स्ट 20-25 years will also happen. ये भी इंडेक्स बढ़ता जाएगा. So at 60,000 to get to 100,000 is just basically 2-3 years of compounding at 16%, 18% out there. So I'm very hopeful. Now the question is, what businesses should you buy to take part in this? अगर आप busy हैं आपके काम में, आपके profession में, तो perhaps an index fund is good. But if you like to pick stocks, India is large, as a buffet of choices you say. जो हमने अभी लिया है recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them, but they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म आज देखना नहीं था, and yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. All right. So that gives us a great opportunity, great visibility in these companies. And I think corporate governance standards generally in India have improved. So the people who are scared of corporate governance, and maybe in OMCs, it's still a problem. But corporate governance is going to improve dramatically in India. So they offered good values to us, so we made a bet on them. But again, we buy and sell these shares. ठीक है, मैं इन दोनों स्पेसेस पर आपसे बात करना चाहता था दमानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात करनी है आपसे. 60 years क्रॉस करने के बाद आपने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया, आप इतने फिट इतना फिट मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. उसका राज क्या है? नहीं, I think generally, Anuj, after you age, you start to eat less. I think just the appetite shrinks after that. I've had a couple of health scares in the last few years, so I've tried to be a bit more careful. And I'm lucky. What can I say?